Hey guys, welcome back to the channel. Today, I find myself in Pondicherry. Since I started making YouTube videos, I've had the chance to stay at some amazing places in India. I am super excited to share with you two of the best properties in Pondicherry. Widely acclaimed for their food, luxury, and architecture, welcome to La Villa and Villa Shanti. What is up guys, and welcome to another video. As you guys read in the title and saw from the beginning shots, I find myself in a little slice of France in India, which is Pondicherry. अगर आपको पता नहीं है तो पौंडीचेरी जो है चेन्नई से 3 घंटे की दूरी पे है. इट इज़ एन यूनियन टेरेटरी एंड पहले फ्रेंच कॉलोनी था, तो यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है. खाने से लेके, लैंग्वेज से लेके, इवन द लोकल आर्किटेक्चर आपको ऑनेस्टली फ्रांस की याद दिला देता है. इनफैक्ट इफ़ यू गेट वेरी क्लोज टू द बीच, ऑनेस्टली लगता है कि हम साउथ ऑफ फ्रांस में ही आ गए. It's beautiful, and also the drive from Chennai to Pondicherry is supposed to be one of the best in India. In fact, people do this route even for the cycling, even for bike rides, even for road trips. तो होपफुली अगर टाइम मिला मुझे तो आई वांट टू मेक इट सेपरेट वीडियो ऑन दैट. एनीवेज, आज की वीडियो में आई वांट टू शो यू टू ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे व्हेन यू आर विजिटिंग पौंडीचेरी. इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल, आई ट्राई टू स्टे एट ऑल दिस यूनिक, exotic, luxurious places all over India. If you guys haven't seen that playlist, check it out. यहाँ पे linked रहेगा. So recently, to book all these places and to book my trips, I've been using this app called as Vigo. If you guys don't know, first of all, Vigo एक Indian app है, तो try and support Indian apps and businesses as much as possible. Vigo basically क्या करता है? If you guys are planning to visit somewhere and looking at places to stay, what it'll do is कि it'll search all hotel booking websites like Make My Trip, Airbnb, ये सब सर्च करेगा एंड आपको वो होटल का जो आपकी पसंद के होटल है उसका बेस्ट प्राइस देगा. एंड यू कैन यूज़ ऑल द फिल्टर्स यू वांट. आपको कितना बजट रखना है, कितनी स्टार की होटल चाहिए, आपको फ्री ब्रेकफास्ट चाहिए, पूल चाहिए. इट नैरो डाउन द बेस्ट प्लेस एंड द परफेक्ट प्लेस फॉर यू. एंड सिमिलरली इल डू फॉर फ्लाइट्स एज वेल. अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रूट देख रहे हो, व्हाट इल डू इज के सर्च ऑल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स एंड आपके रूट के लिए आपको बेस्ट प्राइस देगा, विच इज़ अमेजिंग. एंड रिसेंटली ऑल्सो व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव कोलैबोरेटेड विद IRCTC सो दैट यू कैन बुक ट्रेन टिकट्स वाया द वीगो ऐप. एंड ऑल्सो इफ यू गाइज आर विजिटिंग एनी प्लेसेज एंड यू लुकिंग इन एक्टिविटीज़, तो ये लोग के पास एक एक्टिविटीज़ का भी लिस्ट है. सो बेसिकली वीगो कैन बिकम योर ऑल इन वन ऐप फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स, hotels, flights, trains, activities. It is all-in-one travel app. Sign up to Vigo using the link in the description box to get the best price on your hotels and flights. So first of all, let's start with La Villa. हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं. दोनों जगह पे 2-2 नाइट्स रुकने वाले हैं. Both of them are sister properties. Basically एक ही parent group है ये लोग का. And other property called as Villa Shanti is just 3 minutes walk from here. And both these properties are basically in the more French part of Pondicherry, which is White Town. White Town जो है basically बीच से बहुत नज़दीक है, प्रोमेनाड से बहुत नज़दीक है. एंड White Town में basically Pondicherry की बेस्ट प्लेसेस, कूल कैफ़ेज़, बुटीक शॉप्स, अमेजिंग ईटरीज़ यही जगह पे है. एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे सब टूरिस्ट अट्रैक्शंस एकदम नज़दीक पे है, विच मेक्स ला विला एंड विला शांति द परफेक्ट प्लेस टू स्टे व्हेन यू आर विजिटिंग पौंडीचेरी. बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दोनों होटल जो है दे बिलीव इन एडेप्टिव रीयूज़. उसका मतलब क्या है? बेसिकली जो ये होटल जो है पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ये लोग ने जस्ट रिनोवेट किया है. रादर देन डेमोलिशिंग ओल्ड बिल्डिंग्स, दे जस्ट रिनोवेटेड एंड जस्ट गिव इट अ फ्रेश पेंट. अच्छा दिखता है पूरा, सो दैट जो फ्रेंच आर्किटेक्चर है वो पूरा स्पॉइल नहीं हो एंड यहाँ की जो फ्रेंच हेरिटेज है उस पर नुकसान नहीं हो. एंड ऑल द फर्नीचर जो भी यहाँ पे है, बेसिकली दरवाजे से लेके टेबल से लेके ये सब जो है, जो फेंका हुआ वुड रहता है जो यूज़ कोई नहीं करता है, उसको ही रीयूज़ करके ये लोग ने वापस बनाया है, विच इज़ अमेजिंग. देयर इज़ नो वेस्टेज. ला विला से स्टार्ट करते हैं. इसका एंट्रेंस जो है बेसिकली वाइट टाउन में है. बाहर से एंट्रेंस एज यू वॉक इन, रास्ते से यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रॉपिकल जंगल. एंड इट इज़ सच अ नाइस ग्रीन वाइब इवन इन द मेन वेरांडा. एंड मेन वेरांडा में ही ये लोग का रेस्टोरेंट है. ओके, गिन के कुछ 20-25 टेबल है, रिजर्वेशन रहते हैं एंड बहुत ही लिमिटेड सीटिंग रहता है. दे बिलीव कि जितने भी लोग आए उसको अच्छा खाना मिले, कोई जल्दी नहीं हो, आराम से यहाँ पे बैठ के लोग चिल कर सके. मेन वेरांडा से यू कम टू अ कॉमन स्पेस जहाँ पे दोनों साइड पे मैप्स है. ओके, लेफ्ट साइड पे जो है बेसिकली तमिलनाडु का मैप है विथ ऑल द टूरिस्ट अट्रैक्शंस. इट लुक्स सो गुड. दूसरे बाजू पे पूरे इंडिया का मैप है विथ ऑल प्लेसेस लाइक
महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके JNK, दिस एंटायर मैप इज़ ब्यूटीफुल, हैंड पेंटेड है पूरा, कोई लोकल आर्टिस्ट ने किया है यहाँ पे। एंड दैट इज़ व्हाट दे डू कि यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट को भी इंटीग्रेट करते हैं। फूड भी जो है काफ़ी लोकल इंग्रेडिएंट से ही आता है, सो पूरी लोकल इकोनॉमी को साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग रूम में आए। रूम इज़ लाइक बेसिकली वन बिग लाइन, बाथरूम से लेके टीवी रूम तक आप पूरा रूम एक लाइन में देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद मेन लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में अच्छा डेस्क है, टेबल है, बेडरूम में एक नाइस कंफर्टेबल बेड है, एंड सामने ही यू हैव दिस 2 लार्ज विंडोज, ओके, दरवाजे हैं, एंड द दरवाजे ओपन अप टू दिस स्मॉल लिटिल बैल्कनी, ओके। बैल्कनी में एज यू कैन सी प्लांट्स ही प्लांट्स है, ग्रीनरी ही है। बेड के अंदर ही एक टीवी का एरिया सेपरेट है, एक काउच है अच्छा सा, इसके सामने टीवी है, DVD प्लेयर्स है। इट इज़ सो क्यूट ऑफ देम कि लोग ने बताया कि अगर आपको अलग DVDs चाहिए, DVD का लिस्ट अलग है। एंड उसके नीचे एक मिनी बार है। मिनी बार इज़ रिफिल्ड वंस अ डे एंड इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द रूम। बहुत कम जगह ये ऑफर करती है। एंड बस बाथरूम की बात करें तो बाथरूम के दरवाजे पे एक अच्छा सा पेंट है विथ मोटिवेशनल वर्ड्स, एंड व्हेन यू ओपन द बाथरूम एक बड़ा सा मिरर है, एंड आपका वहाँ पे बेसिन है, एंड बेसिन के पीछे आपका बेसिक शावर एरिया है। एंड ऊपर बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे एक पूल एरिया दैट इज़ ओपन टू एवरीवन। आप जो भी रूम में रुके हुए हो, पूल एरिया का एक्सेस है आपको। इनफैक्ट आई वाज टोल्ड दैट आपका खाना जो है आप बाहर मेन वरांडा में भी खा सकते हो, आप अपने रूम में भी मंगा सकते हो, या फिर पूल के यहाँ पे भी खा सकते हो। एंड धीरे धीरे पौंडीचेरी भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो होपफुली नेक्स्ट आने वाला है। लेट मी शो यू सम शॉट्स ऑफ दिस प्लेस। चलो। गाइस, सो अभी मैं बैठा हूँ लंच के लिए ला विला के रेस्टोरेंट में। सो यहाँ का एक स्पेशलिटी है द 7 कोर्स टेस्टिंग मेन्यू, ओके। शेफ़ मुझे जस्ट मिल के गया अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू। इंग्रेडिएंट्स आर सोर्स लोकली, मोस्टली ऑर्गेनिक यूज़ करने का ही ट्राई करते हैं। लाइक आई सेड, प्योर फ्रेंच गैस्ट्रोनॉमी है ये। Extremely looking forward to that, and definitely if you guys are ever coming to La Villa, apart from the other mains and other a la carte, the 7 course tasting menu is a must. It is highly recommended by everyone, जो management है, staff है, even the chef है, वो मुझे बोलते हैं कि definitely come and try this. बस let me show you all these dishes one by one. चलो। It's a cauliflower and cumin foam topped with pumpkin seeds, and this one curd with the smoky beetroot, the lemon cream on top. This one herb toasted bread topped with pickled fish. Chef actually French. He's find out local market and everything. So you want to use that local products only. So that's a way he's serving like a French style. So it's like drumstick seeds inside, some tomato, curry leaf oil, and topped with cumin foam. Fried eggplant and topped with lemon cream, pesto and aioli sauce, curry oil with balsamic, sorted spinach and onion, crispy potato, crispy baked. गुड मॉर्निंग फ्रॉम विला शांति। विला शांति की बात करूँ, बेसिकली अ स्मॉलर प्लेस देन ला विला, डेफिनेटली ऑन द बजट साइड, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। इसके थोड़े लुक की बात करूँ, बेसिकली एंट्रेंस सो क्यूट, सो यूरोपियन, छोटा सा एंट्रेंस है बट ओपन अप इनटू अ बिग वरांडा। यू डोंट थिंक कि इतने छोटे से दरवाजे के पीछे इतना बड़ा वरांडा रहेगा। राइट साइड पर रिसेप्शन है, लेफ्ट साइड पे एक लाउंजिंग सिटिंग एरिया है वेयर यू कैन जस्ट चिल, गेट योर कॉफ़ी, गेट अ बुक, आराम से पड़े रहो वहाँ पे। सेंटर में एक बड़ा सा वरांडा है। वरांडा इज़ ओपन टू स्काई, बारिश होती है, बहुत अच्छा लगता है, बर्ड्स होते हैं यहाँ पे, वो सुनाई देते हैं, एंड प्लांटेशन बहुत अच्छे किए हुए हैं वरांडा में। देयर इज़ दिस बिग वॉल, एंड ये वॉल पे पूरे क्रीपर्स हैं, प्लांटेशंस हैं, एंड अराउंड द वरांडा अलग अलग रूम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, एंड इवन टॉप फ्लोर पे अलग अलग रूम्स हैं। बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं हैं, मे बी 20-25। वॉट आई हर्ड अबाउट ला विला इसके, येस डेफिनेटली रहना तो डिसेंट है ही, रूम्स आर वेरी गुड, बट आई हर्ड के मील्स, खाना पीना यहाँ पे अमेजिंग है। लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन पौंडीचेरी। आई वेंट थ्रू सो मेनी ब्लॉग्स, लोनली प्लेनेट के बुक्स, जहाँ पे मैं गया, जितने भी मैंने ब्लॉग्स पढ़े विला शांति के फूड एंड मील्स एंड लंच एंड डिनर के लिए, दिस इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पौंडीचेरी। तो डेफिनेटली कम हियर, यहाँ पे रहना है उसका एडवांटेज तो है ही, बट इफ यू कैसे लिविंग हियर, इसका फूड भी एंजॉय कर पाओगे।
तो लेट मी शो यू द रेस्ट ऑफ द प्लेस. थोड़ा रूम टूर देता हूँ, थोड़ा यहाँ का शॉट्स दिखाता हूँ. चलो. हे गाइस, सो अभी विला शांति में टाइम हो रहा है 12:46. यहाँ पे लंच टाइम हुआ है, लोग आना चालू हो गए हैं. एंड यहाँ पे जो शेफ़ है, यहाँ पे जो मेन हेड शेफ़ है, ही इज़ अ फ्रेंच नेशनल. ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फ्रांस. वहाँ पे वो पूरी अपनी जो कुकिंग है वो वहीं पे सीखा है सब. एंड ही हैज़ ग्रेशियसली इन्वाइटेड अस टू कम एंड लुक इनसाइड हिज किचन कि वो कैसे बनाता है, क्या करता है, एंड व्हाट इज़ हिज फिलॉसफी about cooking. And I'm super excited to share that with you, going inside the kitchen to learn something. ये लोग कैसे पूरा मैनेज करते हैं. वहाँ पे किचन चलते हैं. Let me introduce you to the chef. So guys, meet the chef of Villa Shanti. I'm so honored to be welcomed into his kitchen. So can you please introduce yourself and tell us something about yourself, please? Yeah, sure. So I'm Christmann Michel. I'm a French chef. So I'm working for Villa Shanti restaurant and also La Villa. So today we are in Villa Shanti, and I came 4 years ago. So I'm trying to bring the French culture, the French food, the technique, the skills, the taste. So we are trying to develop that in Villa Shanti. That's amazing. So you learned cooking and the art of culinary and cooking in France itself? Yeah. I learned during mostly 15 years in a different restaurant, Michelin stars restaurant. And the purpose is really to get all the skills, the knowledge. And in the French cuisine, we are trying to really extract and get the flavor of the product. So this is what we try to do here. And usually people are speaking about continental food. So here we really try to make the difference as the French food. Great. So what can people expect when it comes to food at La Villa and Villa Shanti? What is the one thing that you can tell them? I think in Villa Shanti, especially here, the purpose is to have a fresh product, seasonal product, and also our menu is limited because there is no purpose to have so many choices that we cannot handle. We want to do only homemade items, fresh items. So that's why we choose to have really classic dishes, but doing on a perfect way with a fresh product. Hey guys, so we've spent 4 amazing days here in Pondicherry. Staying at La Villa and Villa Shanti definitely enhanced the experience. Honestly guys, ये दोनों जगह जो है पौंडीचेरी के हार्ट में है, वेरी क्लोज टू ऑल टूरिस्ट अट्रैक्शंस. इफ़ यू गाइज वांट टू स्टे हियर, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. डेफिनेटली चेक इट आउट. इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टे व्हेन यू विजिटिंग पौंडीचेरी. एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पौंडीचेरी. Things to do, things to see, where to go, where to eat, the complete travel guide. If you guys like this video, please subscribe to the channel, share it with your friends, and don't forget to give it a big thumbs up. That is it for now. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys soon. Yeah, I can say that Villa Shanti is great because we can find 3 types of cuisine. One side is the French cuisine as the classic dishes, and another side is the Indian part, which come from the region of Delhi. Right. So they are doing the classic dishes as mutton rogan josh, butter chicken masala, and also we have a tandoor department. So it's a real master about the tandoor, where we can find also good classic. The bread are great. We can find tangri kebab. So we have a choice when we come in Villa Shanti to have different cuisine. And that's really good. You're very well versed with your Indian dishes as well. Yes. I also learned a lot from this restaurant, so that's great. That's amazing. So can you make Indian dishes as well? Yeah, I can do it, but I think also we have it in our culture. Yeah. So I can do it, but probably I don't have some feeling, and I learned a lot. Yeah. But still, you have to come from this kitchen. That's amazing. Thank you so much.
Thank you. And please definitely come to Villa Shanti to experience this beautiful cooking. And very friendly, definitely come and say hi to him. Yeah. And yeah, let's check out the food. Sometimes trying to have one items and to do it on another way that people can really enjoy. Exactly. It's a good challenge for us to. I'm always happy when somebody says, usually I don't like, and So you totally sold it to me. I'm gonna try eggplant next time. no, and also appetizer is interesting. You had this smoky beetroot. Yeah. Yes, It's also good because usually I told you in France we love like pork, you know, and here I try to find a vegetarian option. With the curd. Yeah, It yeah. went very well. Yeah. It matched well with the curd. I love this soup also. The soup, yeah. Because moringa is something simple, everybody having at home one tree. Yeah. Yeah. But finally this way is, because we are still staying on a honest price, you know. This is 1,900 the whole menu. Okay. It's still honest because sometimes people don't know how all this work, preparation, plating. But that's why what I told you yesterday, I bring a lot of skills, knowledge, techniques from France, and the local guy shared to me all the product, how to use them, and finally we make a combination of. It comes through. Yeah, because for me everything is new. I never saw jackfruit, curry leaves, tamarind. I never tried them. So no, it's a good experience.